एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि लामा ने कभी इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग नहीं की, अभी तक तो नहीं की. 16 months into operations. एंड इसके दो, there's two reasons for this. नंबर वन, हम छोटी ब्रांड थे, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर को लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए दूं for one post. I simply didn't have the budgets, and I'm sure there's lots of people here running businesses who don't have the budgets for big influencers. Secondly, हमारी brand की ethos, like Usman said, we really spent a long time looking inwards. हमने अपनी brand की एक identity जब build की, तो हमने realize किया कि हम police नहीं कर सकते हर influencer को to stay on brand. All I could do, all we could do, our team could do was stay in-house. So हमने अपने in-house influencers in a way create करने शुरू कर दिए. हमारी अपनी team, कभी मेरी content की team होती है, कभी मेरी CS की manager होती है, कभी मैं खुद होती हूँ. We put on our clothes and head to the studio and get pictures taken. I encourage them, जो interns हैं वो school जाएं, university जाएं, अपने garments पहने और वहाँ पे अपनी तस्वीरें लें. So, I mean, there are ways around this, and we have had good growth. So, I mean, maybe with traditional influencer marketing, we could have grown much faster. I don't know. But as far as our brand trajectory or identity, जो हमारे brand की है ना, हमारे लिए influencer marketing, we don't think fits the bill. जो influencer ecosystem है पाकिस्तान का, it's still very small. It's hard to find people who are on brand, जिनकी alignment है mentally आपके साथ, अगर आपकी अपनी identity बहुत ज़्यादा well defined है. So I just want to put that different perspective in as well. Yes, influencer marketing has done miracles for many brands and continues to, and it has a big future ahead. But for smaller businesses or businesses that want to go a different path, it's not the be all and end all. Thank you so much for adding to that. Zen, again, circling back to you, थोड़ा सा agency perspective यहाँ पे चाहिए because बहुत सारे brands जिनके साथ आप काम करते हैं, they try to upscale their investments in October, November, December. And मुझे पूछना है कि how do you plan or how do you integrate cross-border business into their campaigns? और I also want you to touch upon कि जो अभी हमने बात की drivers की और barriers की, what do you think are the biggest barriers and how do you address them? Or what are the conversations that you have with your advertisers about it? So actually, cross-border e-commerce is actually, it's a conversation that we are having with a lot of our brands, because there are some products, especially footwear. Because fashion, you can say every country can have its own taste and everything, but some classifications of footwear, they are pretty generic all over the world. And for one of our brands, which are one of the largest footwear manufacturers here, and we are actually suggesting them ways to market their products beyond Pakistan as well. And the biggest barrier obviously is the shipping cost, because the shipping ecosystem is not so much developed, from order to order basis, from brand to consumer basis, from here to Pakistan. So there are actually better ways to do that, where brands can actually invest in offshore warehousing, and they can have warehouses somewhere outside Pakistan. They can export the products from there, and then from there they can obviously serve the entire world or a certain region wherever they see, the products fit, the products fit, that kind of persona, where they're exporting the products. So that is a vertical we are actually exploring with a lot of our brands. And there is another thing, even for example, I'll take the example of Eastern apparel. If a Eastern apparel brand is selling someone in UK, 95% of them are selling to Pakistanis who are living over there, who used to know that Eastern apparel brand when they used to live in Pakistan, or through their relatives in Pakistan. So, but the thing is that their tastes are exactly aligned to the people who are not Pakistanis, and they are Asian expats and also living in UK. Our brands right now, none of them actually are able to tap that market. So they are able to sell Pakistanis who are living overseas, but not all the Asian expats who have similar taste of clothing, who live similar sort of clothes, but they don't buy from Pakistani brands. So another vertical that they can explore is, we are working with one of our brands, is
actually, this is where the influencers are going to really help. We are picking down Asian expat influencers in those countries who have influence over Asian expat population living on in those countries, and we are going to enter into long-term contracts with those influencers who are going to create content for us as well, in order to activate that market as well, that right now is being untapped. That's very interesting. Again, I mean, आप लोगों में से किसी को chime in करना है on this? क्रॉस बॉर्डर सेल ना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था तारिक, क्योंकि इतना बड़ा मैट्रेस है, आप उसको जब शिप कर रहे होते हैं तो उसकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा आती है और कि वो जो वहाँ से कहेंगे यार मुझे तो इसकी ड्यूटी वगैरह नहीं भेजना। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कैसे क्रॉस बॉर्डर को आप टैप कर सकते हैं? देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ रह रहे हैं, और बहुत से ऐसे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऐसी होती है जो पाकिस्तान नहीं आ सकती किसी की शादी पे या किसी के इवेंट पे। तो हमने एक ऐसा कंटेंट बनाया, उनको टैप करना स्टार्ट कर दिया कि आप तोहफा भेजें, क्योंकि शादी में मैट्रेस तो हर किसी को चाहिए। तो हमने ऐसा कंटेंट बना के वहां पे मार्केट किया, उन्होंने पे किया डॉलर्स में, लेकिन डिलीवरी कहाँ पे हुई? पाकिस्तान के अंदर। तो हमने इस किस्म के कंटेंट को यूटिलाइज करके एज पर लोकल नॉर्म्स ऑफ XYZ कंट्री आउटसाइड द पाकिस्तान, हमने उसको यूटिलाइज किया, उस सेंटिमेंट को कैटर किया और यहाँ पे अपनी सेल बढ़ा दी। तो एक बड़ी अच्छी केस स्टडी थी हमारे पास इसकी। अमल, एक इसी को लेके एक another talking point that I have is creative considerations when talking about mega sales days, because अभी हमने बात की a lot of discoveries driven through mobile, right? And what are your challenges when you're creating assets for discovery, creating assets for your even for your brand awareness? It's not much different from regular sales days, is the short answer. And Zain can attest to it, and he's always upset with me for not making that extra effort to sell my product on mega sales days. I think I can talk more generally about the struggles of creating content that you want to be on brand, that content jo innovative ho, jo sabse zyada important hai, detail oriented ho, and jo a word that I like to use a lot in our company is honest ho, jiski jo authentic ho, uski jab jo product first ho, in the sense ke hum aisi merchandise banaye that when you see a picture of it, you want to buy it, and when it's delivered to you, you say, oh, this was the best purchase I made this season. So we are actually spending a lot of time in creating content that is simple and honest and authentic to what our product is. Because our biggest struggle has been merchandising at the raw material level, fabrics, breathable fabrics, climate compliant fabrics. Pakistan mein, lekin, cotton ki button down nahi milti aurat ko, for example. If I want to buy a white cotton button down, where do I go? You'll find georgettes and frills and all of that. But if I want to buy basics, where do I go? So, our struggles are creating a product that, serves a niche, but it's not really a niche. Everyone wants to buy basics. ठीक है? T-shirt, plain T-shirt, हर एक की closet में होती है. Every man, woman has a plain T-shirt in their closet. It's ridiculous how hard it is to buy one, to find one here. So, for us, the real challenge is to create content that reflects us as a basics wear brand. Whether it's on normal days or mega sales days, it kind of doesn't matter. Hamara kind of content strategy very simple rahi hai throughout. Our journey's been very simple. One, I told you guys already, we were limited by our resources. Our teams were very small. Our funds were very small 16 months ago. There has been, we have had, very unexpected growth, in the last year. But our content journey has been different from what I see in the rest of the digital ecosystem. And I think Zain can attest to this. I mean, we have had so many arguments, just the two of us. We work with ADEX. We've always worked with them. They've been one of our closest partners, really. And we, has guided us through so much. And, at the same time, so our biggest challenge has been, let me put it this way, how do we capitalize on industry best practices for
digital marketing and discoveries while staying true to who we are as a brand. And इस challenge के अंदर ही हमारी पूरी content की journey kind of sum up हो जाती है. Thank you. Usman, हम challenges की भी बात कर रहे थे. What do you think will be the biggest challenges in the forthcoming mega sales days, considering the whole economic situation the country is in right now? ओके आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन ये है, तो हम एक्सटर्नल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें. आई नो एक्सटर्नल का इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, सारा कुछ है. बट ये वो टाइम है जिसमें यू लुक इन वर्ड्स और अपना सोचते हैं आपके मैं एज अ ब्रांड किधर हूँ. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट आउटफिटर्स की हम बात कर लेते हैं अगर. सो एक ऑन ट्रेंड वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू फॉर मनी इज द नेम ऑफ द गेम राइट नाउ, बट for every person the value of money is different. So we have to understand that कि value of money की जो scale है वो कहाँ पे चला गया है. So उसके लिए पहले inwards देखें, अपने brand को हमने देख रहे हैं, और फिर हम ये सोच रहे हैं कि challenges क्या आते हैं. challenge बहुत सारे हैं, challenge तो हर वक्त रहेंगे. कोविड से बड़ा challenge क्या था, ठीक है, सब कुछ बंद हो गया, लोग घर बैठ गए, we survived. तो challenge जो है ना वो आएंगे और आते रहेंगे. So what we should do as a brand, ये सोचना चाहिए हमें कि हम internally क्या देख रहे हैं. So अगर DNA के अंदर है value for money है, on trend देना है, ठीक है, let's fix that, ठीक है. Customer की profiling करें, that's the most important part. I think हमारे colleague Dial Zero से किसी ने present भी किया था कि connection of brick and mortar store with the digital footprint के साथ आपका connection कैसे create होता है. आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल है, उससे आपकी कस्टमर की प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. एक तो ये होगी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या कर रहे हैं, आपका डीएनए क्या है, आपका पर्पस क्या है, एंड देन यू लुक एट कि कस्टमर की प्रोफाइलिंग आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी. जब कस्टमर प्रोफाइलिंग आप कर लोगे एंड देन यू लुक एट कि आप व्हाट इज़ द ऑथेंटिक, जो अमल ने बात की कि आप ऑफर क्या दे रहे हैं कस्टमर को, वो ऑथेंटिक है, ट्रू है to your brand, to the customer. अगर वो होगा तो you will break the clutter, otherwise not. और मेरे ख्याल से ये जो मेगा सेल का जो प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह हो क्या रहा है, आई एम नॉट श्योर कि ये मेटा के अगेंस्ट ना जा रहा हो यार, ठीक है. सो ये मेगा सेल्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट एक क्रिएट होता है, उसमें से 50-60% वेस्ट हो जाता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट उस कस्टमर को शायद मिलता ना हो. उसका प्रॉब्लम ये है कि हम डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे. पिछले 2 साल के अंदर 90% ऑफ द डेटा जो हिस्ट्री में बना था वो क्रिएट हुआ है, ठीक है. सो इतना डेटा हमारे पास है जिसको हम देख नहीं रहे प्रॉपर तरीके से. देख रहे होंगे कुछ लोग शायद, मैं आई एग्री, हम प्रॉपर नहीं देख सके उसको. अगर वो हम डेटा को देख लें और एक कस्टमर को प्रोफाइल करके उसको वो चीज़ दिखाएं जो उसको देखनी चाहता है वो, ठीक है, आई थिंक आपका ब्रांड ऑथेंटिक निकलेगा. हम सेल्स लगाते रहेंगे, साल में 10 सेलें लगा देंगे, कस्टमर आएगा, बट ब्रांड एक्विटी बिल्ड नहीं होगी, और होगा क्या कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. तो मेरा जो पॉइंट है इन चैलेंजेस, जो सबसे बड़े चैलेंज हैं वो यही हैं कि हम इनवर्ड नहीं देख रहे. अभी भी हम यही देख रहे हैं कि आउटवर्ड बाहर से क्या हो रहा है, ठीक है. जैसे हम अंदर देखना शुरू करेंगे, अपने आप को समझेंगे, एंड देन वी विल गो आउटसाइड एंड ब्रिंग अबाउट अ ब्रांड प्रेजेंटेशन विच इज इन फेवर ऑफ द कस्टमर. देन आपको म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट मिलेगी और आपकी जो है आई थिंक आपका स्केल बढ़ेगा. मेरा तो इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है. Thank you, thank you. Heather, I want to ask the same question to you, and with an added leg, where what do you think it will take for an advertiser to win अभी के जो मेगा सेल्स डेज हैं उसमें? एग्जैक्टली तारिक, चैलेंजेस ना हमेशा रहेंगे, और आप देखेंगे हर साल एक नया चैलेंज होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जब मैं गुल अहमद में था तो हमारे पास चैलेंज था स्टॉक का, इन्वेंट्री का, तो वो चैलेंज आया. उसके बाद फिर हमारे पास कोविड का चैलेंज आया. और अब अगर देखें कुछ जो कंट्री की सिचुएशन है, ड्यूटी फ्लड्स वगैरह, तो ऑपरेशनल चैलेंज बहुत आने वाले हैं. हर साल एक नया चैलेंज होगा. हमारे पास अगर सही प्लानिंग होगी ना, जिसमें हम कहेंगे कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमने ऑलरेडी अपने बना के रखे होंगे, तो हम हमेशा कामयाब हो जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये इन्वेंट्री फोरकास्ट कर ली है और ये अगर नहीं बिकती, तो मैंने किस सीजन के अंदर निकालनी है और कैसे निकालनी है. इफ X% इज नॉट वर्किंग, Y% क्या होनी चाहिए.
एक्स प्लेटफॉर्म नहीं वर्क कर रहा, वाई प्लेटफॉर्म क्या होगा। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमने कुछ इन्वेंट्री ऐसी रखी होती है जो हमारे पास सही से नहीं उसका रिजल्ट आ रहा होता, हम उसको दराज पे भेज देते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से, चैलेंजेस की वजह से नहीं बैंक डिस्काउंट लगा सकते, तो हम दराज पे लगा के दे देते हैं। हम कस्टमर्स को वहां से भी राउट कर देते हैं और वहां का नंबर भी अराउंड 30-40% आराम से निकाल लेता है। तो चैलेंजेस हमेशा यहाँ रहेंगे, हमें हर चैलेंज का एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालना है और उस सोल्यूशन पे अमल करना है और उसके लिए पहले से तैयार रहना है। ये इवेंट अभी इस वक्त क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी से ही प्लानिंग करेंगे तो आप नवंबर की सेल जो है उसको इनकैश कर सकेंगे। और नवंबर का मंथ तो ऐसा होता है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, 11/11 है, फिर उसके बाद आपके ब्लेस फ्राइडेज आ जाते हैं, फिर आपके साइबर मंडेज आ जाते हैं, एंड देन दिसंबर में आपके पास फिर न्यू ईयर की सेल आ जाती है। ये सीजन एक ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली जो है ना कस्टमर परचेजिंग के मूड में होता है, या सीजन इस तरह का होता है। विंटर सीजन वैसे ही हर ब्रांड के लिए जो है जिसे कहते हैं कि मार्जिन वैसे ही उसमें बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे होते हैं, तो ये वैसे ही आप करें। अगर आप ब्रांड की कोई सेल भी ना लगाएं, आप 11/11 पे फिर भी देख लीजिएगा आपकी वेबसाइट पे दूसरे दिनों के बनिस्बत सेल ऑटोमेटिकली तय होगी। 1 रुपए की सेल ना लगाएं, सेल एडवर्टाइज भी ना करें, आप ब्लैक फ्राइडे वाले दिन देखेंगे आपकी ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे सेल्स अप होंगी। तो ये जो कस्टमर की सेंटिमेंट्स है ना, इसको आपने सिर्फ गेज करना है कि किस तरीके से, किस टाइम पे, कहाँ पे राइट कंटेंट के साथ मैं इसको इनकैश कर लूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, चीज उसको अभी नहीं चाहिए, चीज उसको चाहिए शायद 2 महीने बाद, लेकिन आप उसको अभी इस तरीके से दिखा दें कि अगर उसने अभी लिया तो ये 2 महीने बाद भी उसको चाहिए होगी ना, अभी फायदा लेने का। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट कंटेंट राइट टाइम पे आप इनकैश करें। इस टाइम पीरियड में चाहे आप कोई कैंपेन लगाएं ना लगाएं, इन्फ्लुएंसर यूज करें ना करें, आपकी सेल का इंपैक्ट आएगा। इसको अगर एम्पलीफाई करना है तो हमें वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जो ऑलरेडी मेरा ख्याल है आप लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर बता दी। राइट यूज ऑफ कंटेंट, डिस्कवरी पे आपने कैसे काम करना है, प्लेटफॉर्म पे कैसे करना है, एड्स कैसे बनाने, इन्फ्लुएंसर को कैसे गेज करना है। तो दिस इज द राइट थिंग। आई थिंक हर चैलेंज के लिए हर एक का सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, एंड प्री प्लानिंग हम लोगों को बचा देगी हर चैलेंजेस से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अभी पता ही नहीं चला, टाइम इतनी जल्दी गुजर गया, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। सो वी आर नाउ ओपनिंग अप द फ्लोर टू क्वेश्चंस। If there are any questions, any questions at all? आई थिंक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। कोई करें, टफ क्वेश्चन करें, वी वुड लव टू आंसर। Can we have a mic there? एक यहाँ पड़ा। लेकिन हमने जान के माइक भी अपने पास रखा हुआ था, आप क्वेश्चन ही ना कर सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था, क्योंकि इवेंट मेटा से रिलेटेड है, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेब 3.0 मेटावर्स, उसके पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस थे। वहाँ पे मार्केटिंग को लेकर क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वहाँ पे अगर हम मूव ऑन करते हैं अपने ब्रांड्स के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम किस तरह से उसको मार्केट कर रहे होंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी, थोड़ा सा प्लीज अगर मुझे गाइड कर दें। थैंक यू। I think that's a very different frontier altogether, which is still evolving. I think once we have more insight into what it's going to be, I think we'll be able to tell you better. But right now we're just waiting. Oh, sure, thank you. Any other question? Yeah, so we have multiple questions there. Can we please have the mic, wahan pe? Sir, Assalamu alaikum. I have a question with Mr. Usman. He rightly, being a leader in the market, I must say him. He's a leader because of the retail industry. He has worked close so many brands. Usman sahab, you rightly, point up के एक profiling होनी चाहिए. वो किस तरीके की होनी चाहिए आपने देखी है? What perception you have in your mind along with other participants can also contribute in that. Profiling करनी है, किस टाइप की करनी है, brick and mortar की करनी है, ऑनलाइन की करनी है, in between करनी है, bridges करना है, क्या करना चाहिए, फर्दर कैसे सेल्स को हम कम करें इन टर्म्स ऑफ सेल्स जो हमारी जा रही है रिटेल के अंदर, हम स्पेसिफिक बात करें रेवेन्यू को कैसे उसमें लेके जाया जा सकता है ऊपर। थैंक यू।
अच्छा, ओके, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिजिटल आदमी नहीं हूँ, ठीक है, बट जो इसका सिंपल आंसर है ना वो ये है कि प्रोफाइल जो होती है ना आपके कस्टमर की, एक तो स्टार्ट होता है कि आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है जिसको आप बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप वो कस्टमर किस कस्टमर को बेच रहे हैं, उसका कस्टमर मार्केट में है। डेटा मैंने बात की कि 90% ऑफ द डेटा 2 साल के अंदर क्रिएट हुआ है। तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज कि हम फ्लोर से, जिस तरह अभी बोनांजा ने भी मेरे ख्याल से ये किया हुआ है और काफ़ी ब्रांड्स कर रहे हैं इस पे काम। आई थिंक जो लोग इस पे ज़रा बेहतर काम कर लेंगे, डेटा एनालिस्ट को देख लेंगे, वो आई थिंक सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, उसमें ये होता है कि प्रोफाइलिंग में कि आपको हमारा ब्रिक एंड मोर्टर, वी हैव लाइक विद आवर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्रांड मिला के 100 स्टोर्स हैं। तो हमारे पास एक बहुत अमेजिंग डेटा क्रिएट हो रहा है फ्रॉम द स्टोर्स, बट उसके अंदर हमारा कनेक्टर, सिंगल कनेक्टर नहीं था कि पॉइंट क्या है जो एक्सक्लूसिव होगा। तो हमने वो सेल फोन लेते हैं और उससे आप कर लेते हैं लिंक अपनी प्रोफाइल के साथ जो डिजिटल प्रोफाइल है, और वो मेटा के साथ हम कुछ काम करके उसको कस्टमर को एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाते हैं। मुझे लगता है कि वो भी डेटेड हो जाएगा कुछ अरसे में, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपकी प्राइवेसी वगैरह बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो कस्टमर आपके पास ब्रिक एंड मोर्टर पे आ रहा है और वो अपने कंसेंट के साथ आपको दे रहा है डेटा, तो आपको प्रोफाइलिंग आसान हो जाएगी। अब आते हैं कि इसके ऊपर प्रोफाइलिंग के ऊपर आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया ब्रिक एंड मोर्टर से, जो सबसे ज़्यादा डेटा हमारे पास आ रहा है, विच इज़ लाइक 85% ऑफ आवर बिजनेस, 80%, और वो डेटा दे रहा है। लेकिन ऑनलाइन पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा मेरे पास आ रहा है, तो मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ उसको और एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और प्रोफाइल के लिए आर्कीटाइप्स बनते हैं कस्टमर्स के, ठीक है। वो आर्कीटाइप्स किस तरह बन रहे हैं, ठीक है, वो आर्कीटाइप्स का हम नाम देते हैं। अब वो थोड़ी डिटेल हो जाएगी, लेकिन उसमें 4-5 किस्म के कस्टमर्स होते हैं आपके पास जो एक आउटफिटर्स या एथनिक के ब्रांड के ऊपर स्टोर पे आते हैं। वो 5 कस्टमर जो हैं वो क्या करते हैं, कितनी बाइंग करते हैं, किस तरह बाइंग करते हैं, ठीक है। वो 5 आर्कीटाइप्स हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर उनको कस्टमर की प्रोफाइल बिल्ड करके उसके अंदर बिल्ड कर देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। जब वो ड्रॉप हो जाता है तो हमें पता चलता है कि यार ये कस्टमर हमेशा इतनी बाइंग करता है, ये एज ग्रुप की बाइंग करता है, इतने शॉर्ट्स खरीदता है, इतने टॉप्स खरीदता है, इस कलर के खरीदता है। तो उसको कस्टमाइज उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ये कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो राइट नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डेटा कलेक्शन मोड में, ठीक है। तो सबको मेरे ख्याल से सब लोग इस टाइम पे यही कर रहे हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट वुड बी कि आप कस्टमर को आप म्यूचुअल इंटरेस्ट जरूर देखें। अगर हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे और ऑथेंटिसिटी नहीं होगी हमारी इस सारी कम्युनिकेशन के अंदर उस कस्टमर के साथ, तो ये नया कस्टमर जो है ना, ये जेन ज़ी और सब, ये इनकी लॉयल्टी नहीं होगी आपके साथ कभी भी, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते हैं एंड दे बिकम अ कम्युनिटी। तो इवेंचुअली आपको एक कम्युनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और दैट्स व्हाट मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द ब्रांड इंटरनेशनली एंड लोकली जो कस्टमर ड्रिवन है वो ये सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। Thank you. Can we have one more question from here, please, and then we'll conclude. I already have the mic. Can I go on? I have the mic. Hello, everyone. Thank you so much. My question is once again to Usman. I feel like, my apologies to the other facilitators as the question is coming to you. You mentioned about the fact that, you were building micro-influencers, right? And I feel like this is like so pivotal. The majority of the brand, the bigger problem what they're facing is that the influencers that are already working are not connected with their ethos, right? And where you have to build your own influencers. I need more data in terms of that, because that's the kind of pivot that I want to push with my clients too at the same time. It doesn't really matter that influencers in the market, if they're not aligned with your ethos or your overall style, right? How can we ensure, because, so can you share a bit of data? That will be really, really helpful. ओके, सो डेटा तो मैं भी शेयर नहीं कर सकूंगा इस तरह का, बट देखो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है कस्टमर के साथ, इतनी नॉइस के अंदर तो इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। तो माइक्रो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनका एक बहुत लो स्केल का फुटप्रिंट है, बट व्हाट दे हेल्प यू इज इन लॉन्ग टर्म। आप ये सोचोगे कि अगर वो 100 भी उसके फॉलोअर्स हैं तो वो कुछ अरसे बाद वो 3000 तक टच कर जाएंगे, 4000 टच कर जाएंगे, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे ऑथेंटिसिटी के साथ, क्योंकि वो आपके ब्रांड के साथ अलाइंड होंगे। सो द क्वेश्चन इज कि वो इन्फ्लुएंसर्स जिनका एथोस आपके ब्रांड के साथ मैच करता है वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं आपको। आप जिससे बात करते हैं वो 8-9 ब्रांड कर रहा होता है,
ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ट्रस्ट कर सकें उसके ऊपर। तो इन्फ्लुएंसर करने का लॉजिक ही यही था कि आप ट्रस्ट कर सकेंगे, बिकॉज कस्टमर्स का ट्रस्ट ब्रांड के ऊपर कम हो गया था। ठीक है, देखें आपके जितने ब्रांड्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट जो होता है ना वो क्यों खत्म हो रहा होता है, बिकॉज आप सेल लगाई जा रहे हैं, सेल लगाई जा रहे हैं, अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांड की वैल्यू जो है ना, अगर आप 4 सेल लगा रहे हैं, सीजन एंड सेल लगा रहे हैं, एक प्रमोशन देते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, वो एक आपको अपनी सैनिटी लानी होती है अपनी इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, वो आप निकाल लेते हैं। बट अगर आप कंटिन्यू सेल पे जाते हैं, कस्टमर जो होता है उसके पास उसकी लॉयल्टी खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग कि वो किसी और का भी ले लेंगे प्रोडक्ट, किसी और का ले लेंगे। सो व्हाट इन्फ्लुएंसर डज इज इट ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी, और वो अभी मार्केट में नहीं मिल रहा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम स्केल है, बहुत बड़ा स्केल है हमारा माशाल्लाह, बट वो स्केल कब तक है? ठीक है, वो उस वक्त है तक है जब तक ऑथेंटिसिटी है एंड कस्टमर्स लव आवर ब्रांड। अगर नहीं है ना तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए माइक्रो आई थिंक बहुत क्रिटिकल हो गए और हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा हम सबको। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं, हम दिस इज इनिशियल फेज। हमने अभी बहुत थॉरोस के अंदर नहीं गए, लेकिन वी आर पुशिंग इट, किसी तरह ये हम कर सकें और भी ब्रांड हमारे साथ मिले। लेकिन उसमें होगा ये कि उस इन्फ्लुएंसर को थोड़ा सा अपना भी ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और ऑथेंटिसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज रन ऑफ अ मिल होगा, बैंड वैगन होगी और सब उसी पे चल रहे होंगे। Usman, thank you Does that so answer much it? for answering that question so comprehensively. I think I'll now conclude the panel session. I think we can all agree it was a very, very insightful session today. And thank you again for taking out the time. And can we please have a round of applause for our panelists here today? Can you please just, everybody? Just some souvenir that you want to give you. Thank you very much once again. It was great having you here over. And, I believe let's have more of these sessions. A lot of insights that can be shared. Initially, we were also having a session. I was talking to Usman also. And I think it's great. There's a lot of learning for us also. There's a lot of learning for the people. And let's try to, expand as much as we can. Thank you once again. Thank you so much. You're welcome. Huh? He really wants that picture. अच्छा तस्वीर ये माइक पकड़ने भाई है ना भाई Thank you so much, everyone. While they're getting the pictures taken, I'm just going to have the feedback survey on board. So we're very, very close to the end of our event. So there's a feedback survey that's going to pop on the screen. I would request all of you to please take out just 2 seconds and fill that up. It won't take too long. So that's one thing. The second thing at what is showing on the screen. Okay, anyway, that will happen. That'll get fixed. The second thing, we have a very fun game for you guys. So we like to end our events with a little bit of a bang so that everyone remembers us well and everyone goes home with like some sort of giveaways. So Kahoot is going to be up right after this, and uske baad hum lunch khol denge, and that's it. Thank you for being such a great audience. The feedback survey is up. Please scan this. The importance of this feedback survey is that it helps us improve our events. It helps us give you guys better insights. We understand that कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप लोग के perceptions में होती हैं कि आप लोग चाहते हैं कि हम वो करें. So your feedback naturally becomes very important for us to take away. So I'll just let that be up for another minute, and then we can move to Kahoot.
how many of you have played Kahoot with us before? I feel like some of you have. Yes, I see the hand raised from the Outfitters team.